All right, hi guys. Just bear with me. थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोशिश करेंगे समझने की. So make sure that you are asking questions on time. प्लीज चैट के ऊपर पूछ सकते हो. You can unmute and you can speak also. So that's how we're gonna go about it. ठीक है? So obviously a couple of things are left, and most of the stuff is just basic stuff that you've already done in the past. एक आध दो तीन चीजें होंगी जो थोड़ी बहुत नई आ जाएंगी, बाकी सारी चीजें वही रेपिटेशन पे ही चल रही हैं. तो just at any point I lose you, make sure that you ask. ठीक है? So हमारा जो basically you can hear me, right? If there's any problem in the sound, let me know. Video might have a little lag. Um, so do let me know if you can't hear me or anything. So basically, so today's agenda is I want to complete like half an hour के अंदर two things, एक घंटे के अंदर, sorry, two things at least. One is the balance of payment, and one is our foreign exchange. ठीक है? So hefty task, but we'll try and cover this as quickly as possible. So basically, balance of payment we've already dealt with in the past. We did like a very brief, and we said कि जी AS के अंदर जो है current account is part of your course, and we did current account extensively. And then today we're going to basically add on two other accounts in it, which is the capital account and the financial account. We might have spoken a little bit in lesser detail, but today we're gonna look into it a little more. So if you remember, हमारा जो current account बना था, that basically had four accounts in it. One was the trade in goods, and you had the trade in service. ठीक है? Then you had the primary incomes, and you had the secondary incomes. इस note के अंदर we don't have this discussion, but it has been spoken about in your AS, if you just remember. लेकिन चलो, let me remind you. So basically what we were dealing with was कि अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो हमारे पास ट्रेड इन गुड्स का नंबर आ जाता है. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास ट्रेड इन बैलेंस बन जाता है. देन वी हैव द प्राइमरी इनकम्स, जिसके अंदर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते थे, इनफ्लो माइनस द आउटफ्लो. And what it basically entailed was primary income is the interest that you basically earn or you have to pay on the loans. It could be the dividends that you earn on the investment in stocks, or it could be profits on some sort of business, or it could be the workers' compensation when workers go abroad. They're the local residents from here going abroad, and then they, provide some service, and the foreigners pay them for it. इसको आप workers' compensation कहते हैं. So all of this basically goes into the primary incomes. And then in your secondary incomes, we spoke about say some sort of gift and charity and donation and any kind of remittance which is coming from overseas Pakistanis. तो वो इसके अंदर secondary incomes के अंदर basically include होता है. But this is of the past. Now, in present, सेम कॉन्सेप्ट एनी टाइम. बेसिकली पहली बात तो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, तो वी जस्ट ब्रीफली अंडरलाइन. It records all economic transactions between the resident country and the non-resident, basically country with other countries, right? तो इसके अंदर in a given period of time record होता है. It has three accounts. Um, it also includes something called the net errors and omissions account, which is also known as balancing item. We're going to go about it
in detail. Mostly countries के लिए जो current account होता है, that is the biggest account, but sometimes countries might have financial account as the biggest component, but obviously इसके अंदर investments वगैरह जाती हैं. So to cover financial account, there are majorly three things that you need to know, and then obviously the fourth one also. But three things के अंदर what we have is सबसे पहले, direct investment, which we also call FDI. Foreign direct investment basically factors in, factories and things. कोई एक proper investment लेकर आता है और पाकिस्तान में factory लगाता है, तो आप कहते हो ये foreign direct investment है. Then you have portfolio investment. Portfolio investment के अंदर government bonds and shares में कोई invest करता है. इसमें कोई factories वगैरह नहीं लगी है. You just simply went to the stock market and bought companies के shares, or you went to the bank and you bought some government bonds from it. It's financial asset. You can sell it. You can leave. With foreign direct investment, you usually are not able to leave so easily by selling the businesses. Then you have other investments, छोटी मोटी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट्स रखा दिया, बैंक लोन्स हो गया, इंटर गवर्नमेंट लोन्स हो गए. हाउ यूएस गवर्नमेंट गिव्स अस लोन, तो ये इस तरह की चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं. And then one of a major important account is the reserve assets. We're going to use this reserve assets अभी अपनी currency को manage करने के लिए. जब हम fixed exchange rate करेंगे, we might have spoken about this earlier also. But ये जो एक reserve asset होता है, official foreign currency reserve, it is also called. तो इसके अंदर आपके gold, foreign exchange reserves and special drawing rights और इस तरह की चीजें आपके पास रखी होती हैं. बेसिकली ये यूज होती है जब आपकी करेंसी, आपके पास शॉर्ट फॉल होता है एंड योर करेंसी इज ऑन द वीकनिंग पाथ और द स्ट्रेंथनिंग पाथ, तो आपके रिजर्व एसेट के अकाउंट को यूज करते हो बाय आइदर बाइंग द रिजर्व और सेलिंग द रिजर्व. पूरी इसकी डिटेल के अंदर अभी आगे जाके बात होगी. But if you have a financial account deficit, in short, what it means is that obviously there is more money going out than money coming into the country. Obviously, we say okay, it can be a problem, maybe it's not a problem, but it depends. What it depends on is, imagine if a foreign economy has invested heavily in our economy. तो उससे क्या होता, inflows would have been more. By the way, ये मार्क गलत किया है. Outflows are greater and inflows are less. That means we're investing abroad and foreigners are investing less in our economy. If we're investing abroad, our money is going out. Now, you might say that that might be a problem because money is leaving the country. Sure, in the short run, it can be considered a problem. But in the long run, what you can expect इसके लॉन्ग रन के अंदर आपके पास डिविडेंड्स आएंगे, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट्स आएंगे. तो इन द लॉन्ग रन इट माइट एक्चुअली बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. सो लाइक इट सेज ओवर हियर, यू कैन हैव इनफ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. ठीक है. बट वन थिंग वी रियली हैव टू वरी अबाउट इज कि अगर पाकिस्तानीज आर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू lack of confidence in the economy. If that is the case, we know that this money is actually leaving the country, जिसको आप capital flight भी कह सकते हैं, and we know that even the profits are probably not coming back into the country, and that's a problematic scenario, and it will obviously depreciate our currency in the coming months or years, and obviously फिर उस case के अंदर it is considered a problem. So you understand. So there are two things that we've basically talked about over here. Under what circumstances might be a concern. However, under what circumstance it might not be considered a problem. तो ये तुम्हें इस तरीके से इसके डिस्कशन को करना है. Obviously, you always have to talk about both sides to qualify for a double side answer. The similar way you have financial account surplus. Surplus means
that the money coming into the system, the inflows are greater than the outflows. It might be considered a good thing because foreign loan is coming into our economy. इससे हमारा current account, sorry, balance of payment positive हो जाता है. But again, the same problem. Short run में it might be beneficial because the money is coming in, but in the long run, it might be a problem because a lot of money is going to start flowing out of the country in the form of profit, interest, and dividends. ठीक है, तो बाय द वे ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स जैसे मैंने अभी बताया, ये करंट अकाउंट की प्राइमरी इनकम्स में रिकॉर्ड होता है. तो प्राइमरी इनकम्स के अंदर जो है वो पैसा बाहर जा रहा होगा. बट इफ यू हैव मनी कमिंग इन फ्रॉम सम अदर अकाउंट्स इन द करंट अकाउंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ रही होगी, देन इट माइट नॉट बी कंसिडर्ड मच ऑफ अ प्रॉब्लम. तो ये तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंट के सरप्लस की डिटेल हो गई. कैपिटल अकाउंट के अंदर हम ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट में जो है ना, नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं. बेसिकली यू डोंट इंटेंड टू अर्न एनी प्रॉफिट ऑन दिस. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अ फ्यू थिंग्स. एक गवर्नमेंट की डेट फॉरगिवनेस. आईएमएफ ने हमें पैसे कुछ माफ कर दिए तो हम कैपिटल अकाउंट में जाके उसको राइट ऑफ कर लेंगे. फिर समटाइम्स जब आप मुल्क से माइग्रेट कर जाते हैं या कोई मुल्क माइग्रेट करके वापस से लेट से किसी फॉरेन इकोनॉमी से वापस पाकिस्तान आ जाता है, तो दैट मनी इज रिकॉर्डेड व्हेन दे सेल ऑफ देयर एसेट्स एंड ब्रिंग द मनी बैक इनटू द कंट्री. So if a Pakistani is moving abroad to Australia and they sell off all their assets and they move abroad, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा. फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर सेल एंड परचेज ऑफ कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, मिनरल राइट्स, इस तरह की अगर आपने कोई राइट्स खरीदे हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान या पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स के लाइसेंसेस मिल रहे हैं, इफ $1 लाख का, so if a foreign economy purchases that, so obviously that will bring an inflow into the capital account because we just sold the mineral rights. Now they can come and bring in the foreign direct investment and they can do extraction. तो वो एक अलग बात है. ठीक है, तो ये हमारे तीन अकाउंट्स हो जाते हैं: करंट, कैपिटल, फाइनेंशियल. अगर तीनों को मिला के यू हैव a surplus, you say balance of payment is in a surplus, but it can be in a deficit also. It can be a combination के करंट में सरप्लस आ रहा है, बाकी दो में डेफिसिट आ रहा है और वो मैच कर रहा है. तो यहाँ पे बात हो सकती है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम की. ठीक है, बैलेंस एंड इम्बैलेंस की. तो इफ योर inflows are equal to the outflow, आप कहेंगे you have a balance of payment, the inflows are equals to the outflow. टेंशन की बात नहीं है, करेंसी स्टेबल रहेगी. The problem comes when you have an imbalance, you have surplus or deficit. So we'll see to that in just a bit कि उसका क्या सीन हो सकता है. ठीक है, all right. So taking our discussion forward, we also, in a balance of payment, we also have an account which is called net errors and omission account. इसको आप balancing item भी कहते हो. बेसिकली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर्पस क्या है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होना चाहिए. इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स should match. But sometimes, unfortunately, what happens is that your inflows and outflows are not matching. Okay. And the reason we say is it is very difficult to keep an accurate record of millions or billions of dollars moving from an economy on a daily basis. It is quite possible that you might have some mistakes. It is possible that you might have made an error in the transaction कि आपने 2000 को 200 लिख दिया, प्लस को माइनस कर दिया, मिलियन को बिलियन कर दिया, कुछ इस किस्म की तुमने कोई कैलकुलेशन, कोई नंबर एरर डाल दिया. एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू माइट हैव मिस्ड आउट ऑन अ फिगर. ट्रांजैक्शन ही मिसिंग है. तो अकाउंट के अंदर, इफ यू रिमेंबर, जिसके पास अकाउंट है, देयर इज अ सस्पेंस अकाउंट.
which says that there might be a lack of information or some sort of error you might have done, and because of that, the balance of payment is not balancing. So what you intend to do as a result is, in order to balance, आप एक errors and omission के अंदर एक account खोल लेते हैं. For obviously your intention is not कि बस एक दफा डाल दी and then you let's forget about it. But the purpose of this account is कि in the future, when you're going to have a better quality and information available over the period of time, तो ये जो size है of the errors and omission का, it should decline over the period of time. सही है. पर अगर कोई बहुत ही कोई आपने गलती की हुई है या कोई आइटम लॉस्ट हो गया है या लेफ्ट आउट हो गया है, तो इट माइट बी पॉसिबल that it might not balance, or you might have a very small errors and omission. But मेन आइडिया हमारा ये होता है कि एरर्स एंड ओमिशन के अंदर हर चीज नहीं डाल दो. इवेंचुअली यू वेट कि कभी ना कभी तो कोई इंफॉर्मेशन जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजैक्शंस होंगी, एंड हो सकता है कोई पेपर वर्क वगैरह आए, तो उससे फिर आप बैलेंस ऑफ कर लो उसको. ठीक है. सो दैट्स आवर कॉन्सेप्ट with the current account and the capital and the financial, and how the account is basically made. Um, फिर उसके बाद we want to talk about how different policies. अब यहाँ पे we have a few policies. We have the fiscal, we have the monetary, you have the supply side, you have the protectionist, and you have the exchange rate policy. तो काफी सारी पॉलिसीज हैं, एंड वी वांट टू सी इन सारी पॉलिसीज का इम्पैक्ट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर किस तरीके से होगा. So you will be required. In the past, we've talked about how fiscal monetary policy might have an impact on inflation and unemployment and economic growth. Basically, different macroeconomic objectives पे हमारी policies कैसे impact करती हैं. But remember, I have highlighted about 5 policies over here, right? You have about 5 policies over here. Now you have to learn the impact of these 5 policies on various things. Okay? इसमें तुम्हारा inflation पे impact through ADAS की changes, the supply side policy, उसमें भी inflation, economic growth, unemployment, balance of payment, foreign currencies, even distribution of income, इन सब के ऊपर कैसे लिंक बनेगा. तो first thing is you need to know each and every policy. I am sure that you're well aware of one of our major policy, which is called the fiscal policy. Fiscal policy, monetary policy, right? हमारे पास जो ये दो policies हैं, the fiscal and the monetary policy, we know that these policies are very effective in the short run, right? And they both are basically demand side policies. These are the two major things you need to know about these. अब इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या ताल्लुक है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमने कनेक्शन बनाना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड वी नो इट इज पार्ट ऑफ एडी, राइट? यू नो दैट, राइट? एग्रीगेट डिमांड के अंदर एक्स माइनस एम का एलिमेंट है. तो फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी किस तरह से यूज हो सकती है? तो हमारे पास एक आइडिया है, आगे भी अगले पेज के ऊपर वी हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, but something called the expenditure dampening policy या reducing policy. Purpose क्या होता है contractionary fiscal and contractionary monetary policy का? कि what we intend to do is we want to monetary policy के अंदर let's reduce the money supply, let's raise the interest rate so people can borrow less and consume less and invest less and basically demand less of domestic goods. Okay, that was our primary objective. फिर आपके पास फिस्कल पॉलिसी के अंदर you have less government spending, more taxation on the people, falling disposable income, and that will also reduce consumption and investment and effectively reduce aggregate demand. So both of these policies basically reducing
reduces the domestic demand for goods and services. एंड ऑब्वियसली we're hoping कि जब लोगों की ओवरऑल बाइंग पावर ही खत्म हो जाएगी थ्रू ईदर ऑफ द पॉलिसी, तो वो इंपोर्ट भी कम करेंगे. And then the domestic producers will have no choice because local goods की demand तो गिर गई है and imports की भी. So local producers can now export these goods abroad. And that's how we make हमारा balance of payment पे impact, that the balance of payment will improve. Notice I use the word improve. I've used the word improve mainly because uh, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरी नहीं है कि सरप्लस में जाएगा. इट माइट टेक टाइम फॉर इट टू गो इनटू सरप्लस. तो ये थोड़ी सी हमारी डिटेल है ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, व्हिच अगेन आई एम अस्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ. देन यू हैव द सप्लाई साइड पॉलिसी. सप्लाई साइड पॉलिसीज के अंदर हमें ये बात पता है कि सप्लाई साइड पॉलिसीज जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करती है. And the way we're trying to achieve this is through international competitiveness. That's our purpose. तो इसमें हमारा क्या एम होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रू लेबर प्रोडक्टिविटी, बाय एजुकेटिंग दीज पीपल, तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होंगी, क्वालिटी अच्छी होंगी, तो वी आर गोना बी बाइंग द लोकल गुड्स. और उसकी वजह से जो है हमारे एक्सपोर्ट, so let me write, like for example it will improve, the quality will go up, the price is going to go down, and a result will be exports will rise and imports will fall. तो ये हमारा impact होगा basically supply side policy का. That's our intention behind uh, doing this policy. ठीक है. देन उसके बाद प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, इफ यू रिमेंबर, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी हमने एएस में भी पढ़ी है. इट्स ऑल टू डू विद टैरिफ्स एंड कोटास एंड ड्यूटीज एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें क्या होता है कि जब आप बाहर की इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आर्टिफिशियली टैक्स वगैरह लगा देते हो तो उससे इंपोर्ट में रिडक्शन आ जाती है. तो ऑब्वियसली दैट कैन improve. I hope you know that because that's the easiest one of them all. And then you have the exchange rate. कि आप exchange rate fluctuation से, if I was to write, we know that if I depreciate my currency, if I lower its value, अगर हम depreciate करेंगे तो हमारा प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गिर जाएगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट विल राइज एंड इंपोर्ट विल फॉल. रिजल्ट क्या होगा? एक्स माइनस एम के अंदर ओवरऑल इंक्रीज देखा जाएगा, एंड दैट विल कॉज एग्रीगेट डिमांड टू राइज. ये हमारा ट्रेंड है. So in a very like basic way, I've made the connection trade balance के साथ, and all five policies somehow you need to be able to connect it to export import. Please question को हमने बड़ा closely read करना है कि ये कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्पैक्ट करने की बात कर रहे हैं. समटाइम्स दे माइट इवन से कि सरप्लस है और सरप्लस को ठीक करना है. तो फिर तुम इन्हीं 5 पॉलिसीज को किस तरीके से ट्वीक करोगे, और अगर डेफिसिट है तो किस तरह से ट्वीक करोगे. आई विल लीव दैट फॉर यू टू यूज योर ब्रेन्स एंड फिगर इट आउट. लेकिन कनेक्शन एक्स माइनस एम से बनाना है. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बच्चे अपनी वही पुरानी आदत में एडी के साथ इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और इन सब चीजों की बात कर लें और बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पैक्ट ही भूल जाएं. तो दैट वुड बी जस्ट ट्रेजेडी ऑनेस्टली. सो फिर हम कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द मेजर्स अडॉप्टेड, यानी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, these can be used to either reduce the deficit or surplus. Very, very important point what they're saying. तो जरा मैं हाईलाइट कर लूं इस बात को. वो कह रहे हैं कि फिस्कल मॉनेटरी एक्सचेंज रेट ये आपके सरप्लस या डेफिसिट दोनों को ठीक करने में यूज हो सकती है. यू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्शनरी monetary, contractionary fiscal, and maybe depreciation.
versus expansionary fiscal, expansionary monetary appreciation. So how this can have an impact on both sides of the argument. Please make sure that on the side, I'm leaving this for you to figure out कि फिस्कल और मॉनेटरी अगर तुम कॉन्ट्रैक्शनरी यूज कर लेते हो, ये दोनों पॉलिसीज अगर तुम कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करते हो, तो उससे आपका इकोनॉमी के अंदर एक्स will go up, M will go down, balance of payment will actually improve. उसी तरह से डेप्रिसिएशन से भी, अब मैंने ही बता दिया है तो अब चलो मार्किंग कर लेना, तो इससे भी जो है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी दोनों से बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूवमेंट आएगी, और एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट गिरेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, सो आई प्रीटी मच टोल्ड यू कि तुमने क्या करना है कैसे। बट देन देयर थिंग कि जो सप्लाई साइड पॉलिसी है, सो इन कॉन्ट्रास्ट द सप्लाई साइड पॉलिसी would only be used to reduce the current account deficit. ये सरप्लस को ठीक करने में नहीं यूज हो सकती है। यू अंडरस्टैंड व्हाई? And even like it is also likely that protectionist policy would be used mostly to reduce the deficit. मतलब कि ये सरप्लस के लिए ट्रीट नहीं हो सकती हैं ये दोनों। सप्लाई साइड पॉलिसी जब आप यूज करते हो तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस बढ़ती है, एज वी जस्ट मेंशन्ड अप हियर। ठीक है, तो इससे आपका इंपोर्ट रिड्यूस होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ये तो आपका जो डेफिसिट है उसको ठीक कर सकता है। सरप्लस में यू कांट से सप्लाई साइड पॉलिसी उल्टी कर दो, देयर इज नो सच थिंग एज सप्लाई साइड पॉलिसी उल्टी कर दो कि प्रोडक्टिविटी खराब कर दो, एजुकेशन में से लोगों को बाहर भेज दो पढ़े लिखों को। नॉट रियली, दिस इज नॉट आवर पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी क्या होती है कि इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस को आपने बढ़ाना है। ठीक है, तो ये डेफिसिट की करेक्शन में यूज हो सकती हैं, बट नॉट द अदर वे अप। Bring PPP. I don't know what you're asking, Zulkarnain. Please be more clarity, Lao. Expansionary fiscal and monetary policy will not be used to improve the balance of payment. It's going to worsen it. अब मुझे हर चीज ही करानी पड़ेगी, तो बस देख लो अभी क्या हो रहा है। अगर तुम एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर लेते हो, एक्सपेंशनरी दैट मींस यू आर रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, यू आर इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट, यू आर स्पेंडिंग मोर मनी, तो उससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट एक्चुअली गिरना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज पाकिस्तानियों के पास अगर पैसा होगा, तुम कम टैक्स करोगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी करोगे, इंटरेस्ट रेट कम करोगे, तो एक्सपोर्ट असल में गिर जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, सो दिल स्टार्ट इंपोर्टिंग स्टफ। तो इससे तुम्हारा करंट अकाउंट वर्स होना शुरू हो जाएगा, देयरफॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज गोइंग टू वर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ expansionary fiscal and monetary policy. So expansionary policy is not going to worsen it, it's going to, sorry, it's not going to improve, it's going to worsen. So आपने opposite, तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फिस्कल, मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी सरप्लस और डेफिसिट दोनों को टारगेट कर सकती है, लेकिन सप्लाई साइड एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेफिसिट को रिड्यूस करने में असिस्ट करती हैं। ठीक हो गया? तो दैट्स हाउ दिस वन डन। फिर उसके बाद दे फर्दर गो ऑन एंड दे टॉक अबाउट दैट देयर कैन बी ओकेजन्स व्हेन द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इज परसुइंग अनदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आप कह रहे हो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट द इशू, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर रहा है,
ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कम किया, क्यों? ताकि हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें। एडी शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट। जब आप इनकम टैक्स कम करोगे, एडी शिफ्ट टू द राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स एंड इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। बट द प्रॉब्लम इज कि जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट पीपल स्टार्ट importing stuff. They might start consuming imported stuff, and that can actually make your current account deficit. So we're talking about how you can have a contradiction, that you were trying to go for an expansionary policy to have impact on the other objective, but it created another impact on the current account deficit. उसी तरह से नीचे फिर और भी फर्दर बात हुई हुई है कि लेट मी रीड, government wishes to increase economic development. Again, economic growth and economic development are two different things. Economic development means economic growth along with improving the living standard of everyone else. So आप infrastructure भी बनाते हैं and all of that. So your aim is to increase the economic development or to finance the deficit on the current account. Uh, it may aim for a surplus on the financial account of the balance of payment. So this is what we're saying. आप चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आप चाह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंट में या आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट जो आया हुआ है उसको बैलेंस करना है। तो डेफिसिट का मतलब है देयर इज मोर मनी गोइंग आउट देन कमिंग इन। तो आपने कहा चलो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आपने मल्टीनेशनल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। उससे क्या होगा? वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इनकम्स भी बढ़ेंगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, एंग्रो हो गया, फौजी का कोई फौजी फूड्स हो गया, आपने उसके शेयर्स बेच दिए। ठीक है? तो इससे भी बाहर से पैसे आ सकते हैं। So borrowing from abroad may help to cover the cost of import raw materials and capital goods, which may in the long run reduce the current account deficit, क्योंकि जब investments हुई है, output हुआ है, you can to attract a net inflow of foreign direct investment portfolio, government will aim for macroeconomic stability. आपकी इंटेंशन है कि कुछ सप्लाई साइड पॉलिसीज को इन प्लेस रखें, उनको दिखाएं कि देखें जी हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपनी यू नो पॉलिसीज को, हम ट्रेड यूनियंस में रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं, मल्टीनेशनल प्लीज कम टू आवर कंट्री, हैव एन इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा। Privatization could be one of the ways through which you can try and do that. तो ये सब चीजों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी और उसको आप बाहर मुल्क से फाइनेंस करेंगे। यूजुअली ये आपको तब करना पड़ता है जब आपको पता है कि आपकी लोकल इकोनॉमी में कोई खास सेविंग है नहीं। यूर अ लो इनकम, मिडिल इनकम इकोनॉमी वेयर देयर इज नॉट मच सेविंग, so let's bring in investments from abroad। तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज डू रीड दैट इन योर ओन टाइम बिफोर यू प्रेप फॉर योर एग्जाम। फिर एक्सपेंडिचर स्विचिंग और डैम्पनिंग आई जस्ट briefly mentioned, so let me just highlight few important bits over here. एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी आप कब करते हैं? स्विचिंग पॉलिसी आर डिजाइन to make the people buy home-based products and less of imported goods from abroad, hence the name switching policy. Let's switch consumers' import-related expenditure into domestic-related spending. ठीक हो गया? तो इसके पीछे they've suggested there are some policies which can be considered expenditure switching policy. ये कौन सी है? Supply side policy, invest in human, let's make them productive, low price, good quality product। तो लोग स्विच कर जाएंगे।
प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाओ, इंपोर्ट को रिड्यूस करो, लोग खुद ही डोमेस्टिक चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स और चीजों के ऊपर आ जाएंगे। करेंसी की मैनिपुलेशन, devaluation, revaluation can also, so if we revalue our devalue our currency, imported goods become expensive, we reduce the import, so that can switch people from, so please make it clear, switching policy kya hai? You want the people to buy stuff, but not international stuff, domestic stuff. Okay, and these policies can help you. In your note taking, make sure you expand on these. Expenditure reducing is different. Again, balance of payment को improve करने के लिए ये है, but these are a little on the harsher side. इन policies के अंदर, reducing policy के अंदर, your intention is, number one, reduce people's aggregate demand, reduce their spending capacity. तो उससे क्या होगा? They will not have money to buy imported goods. So they're going to buy few imported goods. That's one side. Second is, domestic producers will have no choice because reduced demand. So they'll try to make up for their sales in the international market. Export goes up. इसके अंदर ज्यादातर हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, where you raise the government taxes and spending is reduced, you increase the interest rate and you reduce. Basically, you go for a contractionary policy. Let me mention it over here. You're going for a contractionary fiscal and monetary policy in the hope that people will not have money and so they will spend less and we might be able to increase exports. ऊपर mention हुआ हुआ है. Do you understand this? तो ये हमारी दो policies हो जाती हैं, and that sort of concludes our discussion on the current account and how the policies can have an impact. Please, it is an important one for your essay. Like I mentioned, the last 50 pages of our notes, सिर्फ वो करके चले जाओ and you will be fine for your macro side. तो देन ऑब्वियसली जब हम करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट का डिस्कशन बिकम्स मैंडेटरी ऑन आर. ओके, लास्ट ईयर यू ऑलरेडी डन one type of the exchange rate system, which was the floating exchange rate system. Floating exchange rate system के अंदर we said the currency's exchange rate is determined on the basis of the demand and the supply of the currency. Foreigners demand our currency, we supply our currency. तो export अगर हमारी बढ़ेगी तो foreigner will demand more of our currency. अगर हम import ज्यादा करेंगे तो more of our supply will increase और इस तरीके से हमारी करेंसी बैलेंस ऑफ हो जाएगी. अब यहां पे कुछ नई चीजें हैं. एक एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो नॉमिनल और रियल के बीच में होता है. ठीक है, तो टू टॉक अबाउट दैट, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? जब आप एक फॉरेन करेंसी मार्केट में जाते हैं और आप कहते हैं $1 में 160 रुपया ले लो पाकिस्तानी, अब तो 280 पे हो गया है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है. ठीक हो गया, ये नॉमिनल है, ये मार्केट के अंदर चल रहा है, दिस इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, कि अगर मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या मेरी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है तो व्हाट विल एक्चुअली हैपन टू माय बाइंग पावर ऑफ माय एक्सचेंज रेट. तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एमसीक्यूज के लिए ये एक रेलेवेंट फॉर्मूला हो सकता है. So let me write the formula. Please write the formula in your notes as well. Real exchange rate is equal to
जो भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, सो लेट्स राइट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो जो भी हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, यू मल्टीप्लाई दैट विथ बेसिकली, इन्फ्लेशन से हम उसको बैलेंस ऑफ कर रहे हैं ना, तो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। You know how if our currency goes up in value and the foreign country is also going through inflation, we're going through inflation, they're also going through inflation, and we want to figure out कि जी अब real terms के अंदर if we export an item, are we able to buy more of import or less of import? That is what we want to figure out. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पाकिस्तानी रुपया जो है वो 160 इसकी नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ लेट्स से 110, इंडेक्स में है ना, तो बेस ईयर प्लस 10%, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है 10%, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर the inflation rate is 105। तो मैं इस पे अपना रियल निकाल लेता हूं। तो मैं कैसे निकालूंगा? 110 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 160, तो विच सेज कि हमारा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो 167.6 का है असल में, कि $1 is actually worth 167.6 in real terms. That means we're going to be able to buy more if we export our goods, because हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा है ना, तो हमारा इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रियल एक्सचेंज रेट एक्चुअली गोज अप। I can safely say that we are overvalued right now. Basically, this is what it is showing, an overvaluation of the currency. But what it shows is कि अगर पाकिस्तानी गुड 10% से इन्फ्लेशन हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट की प्राइस 10% से बढ़ रही है, इंपोर्ट की प्राइस सिर्फ 5% से बढ़ रही है, तो हमारा एक एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा इंपोर्ट खरीद के दे सकता है। दैट्स व्हाट दिस रियल इज सेइंग, दैट वी विल बी एबल टू बाय मोर ऑफ इंपोर्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। नीचे फिर हम फर्दर लिखते हैं कि देखें जी, आपका रियल एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू राइज इफ आर कंट्री इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन। तो इससे क्या होगा? डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट की प्राइस बेसिकली बढ़ जाएगी। अगर हमारी करेंसी भी अप्रिशिएट करती है तो रिमेंबर, एक्सपोर्ट प्राइस गोज अप। आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि फिर तो हम कम इंपोर्ट कर सकते हैं या कम एक्सपोर्ट करेंगे इन द वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू। आई एग्री विद दैट, but over here we're not looking at it in the volume terms. What we're looking at is कि एक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो हमें ज्यादा इंपोर्ट खरीद के दे सकता है, इफ आर इन्फ्लेशन रेट इज मोर एंड इफ आर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ अप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। फिर एक और एक्सचेंज रेट को मेजर करने का तरीका है जिसको आप कहते हो ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली यू नो कि आपकी कंट्री जो है वो मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, एंड व्हाट यू वांट टू नो इज कि हमारी बेसिकली एक जनरल करेंसी को क्या हुआ है। किसी के साथ गिर रहा है, किसी के साथ बढ़ रहा है, तो वी जस्ट वांट टू नो द जनरल डायरेक्शन कि हमारी करेंसी कहाँ जा रही है, based on the trade that we are doing with multiple countries. Now, यहाँ मैं चेंज करूंगा हमारे नोट्स के हिसाब से। इमेजिन एक कंट्री एक्स है
जो दो कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, यूएसए एंड यू ट्रेड विद जापान, यू ट्रेडिंग विद दीज टू कंट्रीज, ठीक है। यूएसए के साथ यू हैव अ 90% ट्रेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेटेड लार्ज इंपॉर्टेंस की वैल्यू आई एम गोइंग टू प्लेस, सॉरी, एक लार्ज वैल्यू ऑफ वेट आई एम गोइंग टू प्लेस विद यूएसए बिकॉज आई ट्रेड मोर विद यूएसए एंड लेस विद जापान, so just 10% with Japan. अब यहां पे यूएसए के साथ योर करेंसी वैल्यू गो अप बाय 10%, ओके। एंड विद जापान, लेट मी मेक अ चेंज ताकि it becomes more interesting. Your value falls by 50%. जापान के साथ यू लॉस्ट योर करेंसी बाय 50% वैल्यू टर्म्स के अंदर। विद यूएसए यू गेन्ड ओनली 10%। एंड वी वांट टू नो कि जनरली व्हाट इज द इम्पैक्ट। तो ऑब्वियसली 50% इज अ प्रीटी सिग्निफिकेंट फॉल, बट इसका इम्पैक्ट सिर्फ 10 है वेट के टर्म्स में। तो वी आर गोइंग टू यूज दैट। इफ यू रिमेंबर द वेट इनटू द प्राइस, sum of weight into the price का formula. So with USA, we're trading 90% and you have a 10% gain. So let me say about 900 की value weight into price. With Japan, we're trading 10% और इनके साथ 50% ड्रॉप है, तो दैट्स नेगेटिव 500। तो वी हैव अ पॉजिटिव 400 की वैल्यू। सीपीआई का अगर तुमको फॉर्मूला याद हो, तो इट वाज सम ऑफ वेट इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय द टोटल वेट। टोटल वेट इज 100, तो 400 डिवाइडेड बाय 100 टेल्स अस देयर इज अ 4% डेप्रिसिएशन। अच्छा, इनटू 100 करते हैं अगर आप इंडेक्स में निकालते हो। फॉर्मूला वाज sum of weight into price divided by the total weight। ये इंडेक्स के अंदर होता तो इंटू 100 कर लेते हम। बट द पॉइंट इज, सॉरी, ये इंडेक्स के अंदर नहीं है तो इंटू 100 मैं नहीं करूंगा। So the value is 4, and what 4 means is that your currency's value actually went up by 4%, the net effect. इसको तुम कहते हो trade weighted index, where you look at your country's value against a basket of currencies. So you're going to basically write in terms of that. So let me go over it one more time. एक दफा थोड़ी सी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। A trade weighted exchange rate is a measure in index form of the price of currency against the basket of currencies. क्योंकि हर कंट्री मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, तो आप देखना चाहते हो कि मेरी करेंसी कुछ के साथ बढ़ी है, कुछ के साथ सेम रही है, कुछ के साथ गिर गई है। तो मैं एक सिंगुलर वैल्यू के साथ देखना चाहता हूं कि ओवरऑल वेटेड एवरेज में मेरी करेंसी बढ़ी है कि गिरी है। नीचे मैंने इन्फ्लेशन का मेथड यूज करते हुए वेटेड एवरेज का मेथड यूज करके मैंने बेसिकली निकाला ये है कि अगर मेरा यूएसए के साथ ट्रेड ज्यादा है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए, और जापान के साथ ट्रेड कम है तो इसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए। लेकिन जापान के साथ बहुत मेजर करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, यूएसए के साथ बहुत ही माइनर अप्रिशिएट हुई है। तो इनके ट्रेड वेट्स के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड को देखते हुए आई बेसिकली डू दिस कैलकुलेशन दैट 90%, 90 का ट्रेड वेट है एंड ओनली 10% अप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करके 900। जापान के साथ 10% विद द डेप्रिसिएशन ऑफ -50 गिव्स यू अ -500। मैं सम कर रहा हूं क्योंकि मैं ट्रेड वेटेड का फॉर्मूला लगा रहा हूं टू कम टू अ सिंगुलर वैल्यू। तो मेरे पास 900 माइनस 400 के साथ 400 की वैल्यू बनी है। ये सम ऑफ वेट इनटू प्राइस, सम ऑफ वेट इनटू प्राइस, और टोटल वेट इज 100। ये वही इन्फ्लेशन है, ये मैं एएस की बातें कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी एप्लीकेशन मैंने चेंज कर दी है और एक्सचेंज रेट के साथ। तो बेसिकली 4% की इन्फ्लेशन, 4% की
appreciation दिखा रहा है और USA obviously has a much deeper impact 90% trade की वजह से as compared to the devaluation of that. There is no other way I can explain this. Um, then we basically move on to something called the fixed exchange rate system. Uh, so I'll talk about this in the next lecture, probably tomorrow uh, or day after. So